Hi, I asked this question in the class, what are your achievements? And trust me, this is the answer I got from my students. One of them said, सर मैंने बीकॉम किया है. एक लड़का बोला सर मैं लूडो खेलता हूँ. आई थॉट कि चलो चेस टाइप का लूडो लूडो भी आजकल बड़ा गेम हो गया. लाइक चेस हैव कॉम्पिटिशन, लूडो का भी कॉम्पिटिशन होगा. नहीं सर, मोबाइल पे. ही प्लेज लूडो ऑन मोबाइल. सो दिस द काइंड ऑफ achievements people are talking about, and that's one of the top achievements. नहीं सर लूडो अपन टॉप है लूडो में, चैंपियन लूडो में, ठीक है. सो विच मेक मी मेड दिस वीडियो इन विच टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स. नाउ मोस्ट ऑफ अस थिंग्स हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है. एक बार सोचो, हैव यू व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ? Trust me, you can't count that many achievements. So this video will help you understand about your achievements, and we have to write all this because now a lot of companies are asking you achievements. In their introduction you can mention that, they can ask you question that, or this is also coming in a form as well. Like a lot of B schools, a lot of colleges, companies are now asking you a form to fill. So they're not looking for resume because resume will not give a clear picture. So they want a particular set of questions, and one of the main question is about achievement. Now achievement have got two parts: academic achievement and extracurricular. This I'm talking about the extracurricular or co-curricular achievements in this part. So achievements. Now let's go back to school days, school or college. If you have ever organized, participate in an event participation is big. Any event, dance competition, this competition, that competition, it's a big deal. तो mention about all the events you have done. एक काम करो, एक पेन पेपर लेके बैठो, pick up a pen and paper and write down all the achievements you have done. लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में कभी स्टेज पे चढ़ा? यस, लिखो उसके बारे में. ठीक है, राइट. बाद में विल सी व्हाट आर द बेस्ट आउट ऑफ देम, विल सी दैट आफ्टरवर्ड. पहले लिखो आप. ठीक है, राइट नाउ व्हाट वी डूइंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट अस, एंड देन विल फाइन ट्यून देम इनटू 3 4 5 good achievement out of that. So event participation is good, but event organization is even better. So if I organize any events, that's the best thing on the resume you can prove. ठीक है, so mention about all those things. Now there are some students who have never been on the stage, कि नहीं सर कभी किया नहीं, मौका नहीं मिला कभी, या कभी I was too shy or I was too studious. So what we can do, we can talk about the projects. स्कूल में projects था, big book, all those things. So write about all those things. Projects, internships. If you've done any internships, talk about those things. ठीक है, any certificate you had, NCC certificate, NGO certificate, work for NGO, anywhere you have worked, mention that certificate. Technical certificate, yes. Technical certificate I normally include in academic achievement, which I'm going to upload as a separate video, because now a lot of companies have two achievement column, one achievement column for academic achievement and one for the normal achievements. Now academic achievement column is normally blank, but trust me, if you are following my videos, we'll fill that column as well. ठीक है, तो हम बाद में देखते हैं. इन दिस वीडियो आई वांट टॉक अबाउट द नॉर्मल अचीवमेंट, अदर अचीवमेंट्स. ठीक है, सो ये आ गया अपना इसके बारे में. सर्टिफिकेट, एनसीसी कुछ भी किया है अगर, लिखो उसके बारे में, बिकॉज ऑल दिस थिंग कम एज अ पार्ट ऑफ इट, विल बी वेरी हैंडी फॉर यू टू टॉक अबाउट दिस. नाउ दोज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. नाउ कमिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस साइड, इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस you can show many things. Trust me, if you have led a team, so talk about that. I was leading a team of 5 people, 3 people, whatever it is, doesn't make a, it's not that important, but writing about that is more important. ठीक है, then if you have ever achieved a sales target, you have ever saved anything for the company, showed some innovation. Innovation doesn't mean about the product innovation. Innovation can be any kind of innovation. Like I designed or I reinvented the way we used to have our meetings. Earlier the meeting used to be once in a month, but I came on board, I made the things to be once in a week or twice a week. So whatever, लिखो उसके बारे में, वो अच्छा है बुरा है बाद में देखेंगे. We are first brainstorming about us, and those who are working, you can have many example out of your work experience. ठीक है, so let a team, projects के बारे में, talk about the projects you have worked on, भरो उसको. ठीक है, so that we have lot of things handy with us. Trust me, सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है, but we don't think it's a big deal. I worked in London for 2 years. I worked with the गोरा लोग. Trust me, गोरा लोग दिमाग यूज़ नहीं करते, but the way they show themselves is like they are the biggest person on this company. मतलब कंपनी चल रहा है तो उनके नाम पे चल रहा है. And as an Indian, we चुपचाप हम लोग जाके we work and we don't show off. गोरा लोग they try to show off. They know how to show off. Show off, maybe they don't over limit, but they show off in a very good way. That's why as an Indian we always wanted a coach to be a बाहर का. Like Indian team, we always wanted a बाहर का coach.
वाई? बिकॉज वी ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस। नहीं, लीडरशिप में गोरा लोग हमसे आगे है, ठीक है, वी आर ट्रस्ट मी बेटर ऑफ देन देम, बट वी जस्ट डोंट शो ऑफ देम, वी जस्ट डोंट टेल देम। सो राइट डाउन द लिस्ट, मेक अ लिस्ट। कभी भी डांस कॉम्पिटिशन कुछ भी पार्टिसिपेट किया चलेगा, उसको फिर हम लोग थोड़ा इंप्रूव करके दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मेंशन ऑल दोस थिंग। ना अभी लूडो जिसने खेला है, लूडो वी कैन आल्सो इंक्लूड अवर हॉबीज इन टू दिस। हाउ? नाउ लूडो इज नॉट अ बिग डील, but if you participate in the competitions of ludo competition, I'm sure there might be events happening. PUBG, for example, PUBG is the in thing today. So if you ever participate, if you play PUBG, great, but if you start interacting with other PUBG players, have an online forum or participate in that, and now that a lot of colleges have competition based on PUBG, so suddenly your hobby is becoming an interest, and I can mention that as one of the achievements, ठीक है। अगर ये साइड खाली है तो ये अपने काम आ सकता है यहाँ पे। देन स्पोर्ट्स, इफ यू हैव डन एनीथिंग इन स्पोर्ट्स इज अ बिग डील, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत झोल वी कैन डू। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू रन थोड़ा बहुत, आई कैन पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। इफ यू आर बेस्ड इन मुंबई, पुणे, ऑल द मेजर सिटी, देयर इज अ मैराथन हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक, एंड खर्चा कितना है? 500 रुपया। फॉर 500 रुपीज़ यू कैन पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। अपने दोस्त को लेके जाओ, डोंट रन फॉर 42 किलोमीटर, रन फॉर 5 किलोमीटर। वी आर गोइंग टू रन फॉर 5 किलोमीटर। रन मत करो, वॉक करो, दोनों हाथ में हाथ डाल के गो फॉर वॉक। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, यू विल आल्सो गेट दैट एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऐसे दो अगर पार्टिसिपेट कर लिया, आई हैव अ हॉबी, आई हैव अ इंटरेस्ट विद मी, सो मैराथन आई कैन राइट दिस एज अचीवमेंट एज वेल इन केस यू डोंट हैव एनी अचीवमेंट्स, ठीक है। सो कॉलेज में आके, वर्क एक्स में आके कोई भी पार्टिसिपेट किया ना, इफ यूर इन कॉलेज और यू आर वर्किंग, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं, पार्टिसिपेट इन ऑल द इवेंट्स, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर पार्टिसिपेशन एट वर्क आल्सो, एट कॉलेज आल्सो, सो दैट वी कैन गेन मोर सर्टिफिकेट्स। आस्क देम, सर्टिफिकेट देगा, चलो पार्टिसिपेट, fine. So for example, we are also conducting one event with one of the top B schools in Bombay, so every participant in that event will get a certificate, ठीक है, participant in that event. So I want you to participate in as many events as possible so that we can get a certificate of that college, ठीक है। So like this I want you to inculcate a habit of participating. कौन सी चीज़ कब काम आएगी वी डोंट नो, अब सब इकट्ठा करते जाओ, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स, कॉलेज में आके, जॉब पे जाके जो आपने किया है सब उसमें डालो, सो दैट वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी हैव डन। अवॉइड टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स एज अचीवमेंट्स, माई डैड इज अ बिग शॉट, तो तुम क्या हो भाई वो बताओ ना। अंबानी के इंटरव्यू में अंबानी विल नेवर टॉक अबाउट हिज डैड टू बी अ बिग शॉट, या ऑब्वियसली ही विल रिस्पेक्ट हिम, बट ही विल मैंशन हिज अचीवमेंट, नॉट हिज डैड का अचीवमेंट, नॉट हिज फैमिली अचीवमेंट्स, टॉक अबाउट यू, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई एम गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोज लाइक दिस. So that's my starting off. So that's why I'm creating a separate channel for all the GDPI training, so that we can have a list of all the interviews. And trust me, you're going to use this thing for the next 2 years. 2 years kya? All your life. 3 years, 5 years down the line, when you're changing your company, again they ask you same thing. Okay. So all these things will help you at now or at the later stage. Yeah. So now we have written on everything I've done. Sports, NGO, जो लिखना लिख दो उसमें. Now out of this, I'll choose 3 good things. 3 or 4 or 5. For example, I used to be drawing. I used to love to draw, so I have participated in a few drawing competitions. So I'll club them together as one achievement. That drawing is one of my achievements. One of the achievements, academic achievement, if there's a combined column, you can also talk about the academic achievements. Like in college you have done, you are topper, school topper, college topper, usko likho. So that will be number 2. Internship for me will become number 3. And at work experience, I've shown I worked on some projects. I can talk about that. So 4th thing of my life I'm going to talk about. If you worked in multiple companies, great. You can talk about the multiple experiences you had. लिखो, उनमें से भी 3-4 हम लोग चूज करके जाएंगे. Now these 3-4 things are your building blocks of your life. आज के बाद इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आएगा, we can fall back on this. ठीक है. So take a piece of paper, take a screenshot first. So take a screenshot of this. I'm getting a side. Yeah, I'm waiting for you to take a screenshot. ठीक है. Now this list will be there in front of you for all your life. तो इसको अभी अब बनाओ, take a piece of paper, write down everything. Now after this, whichever event we participate, we'll have a certificate. Now wherever I have to fill form, I can use this thing. So create it into a soft copy, make a work doc of achievements, 1 page, 2 page, जितना भर सकते हो भरो. Then out of that, we'll select 3, 4, 5 good achievements and then use them in the interview.
ठीक है. So if you're a CET students, if you're planning to join us for the GDPI training, so then you can show me the list. Then we'll select 5, 6, 4 good achievement out of that, and those 4 will become the pillar of your life. These are the 3 main pillars of my life. So all my interview will revolve around these 3 pillars, 3, 4 achievements. Achievement 1, achievement 2, achievement 3. Give me example where you have failed. I'll give the example out of them. Give me example where you have shown innovation. I'll give example out of them. कोई भी क्वेश्चन आएगा, I can fall back on this. That's the best part of that. So this is my story. This is about my achievements. And because you have worked on them, you will be very confident to talk to. थोड़ा बहुत fake you can do. Yeah, you can't fake much, but yeah, थोड़ा बहुत fake you can do. For example, I did participate in the events in school. स्कूल में मैंने डांस किया था, बट कॉलेज में आके मैंने कभी डांस नहीं किया. सो आई कैन से आई हैव वॉन फ्यू अवार्ड्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस. ठीक है, नो वन गोना चेक यू. सर्टिफिकेट चाहिए, येस, आइडली यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट, बट इवन इफ यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट इट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बीन अ पैनलिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 30 बी स्कूल्स. आई नेवर आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट. ठीक है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेंशन दैट. सो उतना झोल करो जितना तुम कंट्रोल कर सको. Don't fake out too much. Like for example, if you work in Reliance, don't say कि Reliance में 2 ही लोग काम करता है, एक अंबानी और एक मैं. तो उतनी फेंको जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. So may make this list and then finalize 3, 4, 5 achievements. If I missed of anything, please write in the comment box. I'll be more than happy to reply and tell you whether it's a good achievement or not. Alright. So all the best. Thank you.